Good morning, all of you. So, we'll start with your topic 1.4, support for socialism. So, we already dealt with the topic and the meaning of socialism, that is uniform division of wealth. We have already read about the Karl Marx theory on socialism and communalism, how his writings was used like a reference point across the globe. When you talk about Indian Revolution, even in Indian Revolution, the idea of socialism after second round table conference of Mahatma Gandhi, the Youth Congress took up the idea of socialism and writings of Karl Marx and started convincing people to go for the theory of socialism, where wealth should not be concentrated in the hand of capitalists, rather it should be divided among the people. Now let us see. By 1870s, a socialist idea spread through Europe. To coordinate these efforts, socialists formed an international body, namely Second International. So, in Europe, what they started doing was, to support anything, it is very important first to organize it, to plan it, to go step by step. And first comes making an organization, where people making an organization means how in a team, when a name is given to the team, that adds to your energy. If you talk about your IPL, when name is given like Rajasthan Royals and all these names are given, that adds to the energy because you see it with a common motive that I am supporter of this, and these are my clear views about it, and this is how I have to support or how I have to go about with the campaign. So they organized themselves into an international body and called it as Second International. Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition. So in the last video we saw how urban areas, all of a sudden population increase was seen in urban areas because people migrated from the rural areas to urban areas in search of better livelihood. Okay, so what they started doing is workers, they started forming their association and they started demanding for better living and working condition. Their working condition, they worked in a very deplorable condition where they were paid less, working hours were much more than expected, their salaries were less. So this was the problem that they were facing. They set up funds to help members in the times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. So what these associations they started doing was they started keeping funds with themselves. ठीक है, और ये जो फंड्स होती थी वो हेल्प करती थी जो भी वर्कर बहुत प्रॉब्लम में होता था उस समय ये फंड को यूज़ किया जाता था, एज अ रिलीफ फंड यूज़ की जाती थी. एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर रिडक्शन ऑफ working hour and right to vote. Earlier, non-capitalist people, the poor people were not given right to vote. Okay, and since you do not get right to vote, definitely the rich people will select one of the rich among themselves, and if one such person is on the position, will always favor the capitalist. ठीक है, so they started demanding for right to vote. ठीक है, so that if we get right to vote, we'll select somebody among us who will look forward or who will think for our benefit. यही रीज़न है कि इंडिया में हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसे सेलेक्ट करते हैं वही पर्सन हमें गवर्न करता है. ओके, ऐसा नहीं होता है कि एक झारखंड के कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड मेंबर मिजोरम में चला गया या मेघालय का पर्सन झारखंड में आ गया, बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लेस. इसीलिए एक लोकलाइट को रखते हैं प्रॉब्लम डील करने के लिए. सो दिस is what they wanted, that a person, one among themselves, should be there who would look into their problems. Now, in Germany, these associations worked closely with Social Democratic Party and helped to win parliamentary seat by 1905. Socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming government in Europe. Represented by a strong figure in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to run by conservatives, liberals and radicals. ठीक है, ये जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशन को फॉर्म किया था. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म किया, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस फॉर्म किया, लेबर पार्टी उन्होंने फॉर्म किया. ठीक है, बहुत सारी पार्टीज बनी, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग देयर
गवर्नमेंट, बिकॉज अभी तक जो लिबरल रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स थे वो इतनी स्ट्रांग थे अपने रूल में दैट दीज न्यू अपकमिंग पार्टीज कुड नॉट ब्रेक देयर मोनोपोली. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम, ये एक मेजर प्रॉब्लम फेस किए थे लोगों ने यूरोप में. ठीक है. नाउ द रशियन रेवोल्यूशन is one of the least industrialized of European states. This situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through October Revolution in 1917. The fall of monarch in February 1917. The event of October was normally called Russian Revolution. ठीक है, फिर रशियन रेवोल्यूशन हुई जो कि फरवरी 1917 में सक्सेस मिली रशियन पार्टीज़ को. छोटी छोटी जो ये पार्टीज़ अभी आपने पढ़ी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी जो बनी थी, इनको सक्सेस मिली. एंड बाय अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 दे सक्सीडेड इन फॉर्मिंग देयर ओन गवर्नमेंट. ठीक है, और इस पूरे रेवोल्यूशन को जिसमें उन्होंने मोनार्क को ओवरथ्रो किया था, दिस कंप्लीट रेवोल्यूशन वाज कलेक्टिवली कॉल्ड एज रशियन रेवोल्यूशन. Now, how did this come about? What were the social and political condition in Russia when revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. So, I have said earlier also that किसी भी revolt से पहले उसकी एक background होती है. ऐसा नहीं होता है लोग बैठे हुए और अचानक वो खड़े हुए और revolt कर आए. Revolt is the result of कॉन्टीन्यूअस सप्रेशन. बहुत दिन तक लोगों को दबाया गया, लोगों पे बहुत सारे अत्याचार हुए. उस रिवोल्ट के ब्रेक को, उस आउटब्रेक को हम रेवोल्यूशन कहते हैं. सो बिहाइंड एनी रेवोल्यूशन देयर इज़ एन इमीडिएट कॉज. ऑब्वियसली कुछ रिसेंट होता है जिसकी वजह से रिवोल्ट होता है, उसके अलावा कुछ बहुत ही लॉन्ग रनिंग कॉजेज़ होती हैं, जैसे सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज. ठीक है, ये सब क्या सोशल कंडीशंस थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी रशिया में, ऑल दिस विल बी रीडिंग. विल फ्यू ईयर्स बिफोर कैसा रशियन एम्पायर था, क्यों लोग अपने मोनार्क से इतने अनहैप्पी थे दैट दे ब्रोक आउट टू रिवोल्ट. ठीक है, जार निकोलस II के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ही इज़ योर जार निकोलस II. ये है जार निकोलस II. ही इज़ फ्रॉम द रॉयल फैमिली हु रूल्ड रशिया एट दैट टाइम. सो ऑल दिस विल बी डूइंग इन योर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.